Hello everyone, welcome to Creative Taanushree channel. Today we will see decount function in Calc. आज हम देखेंगे decount function Calc में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. decount का syntax है decount bracket open database then data field and search criteria. So let us take the same example which we have seen in the earlier episode or earlier function. So we have 9 rows, one database with 9 rows, 9 datas. So our objective is to find out ki, the number count, find out the number of names or number of counts which has the which is more means whose distance is more than 600 from school. So let us take an example. हम अभी देखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ स्कूल कितने नंबर्स होते काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होते ये जिसका स्कूल का डिस्टेंस है 600 मीटर 600 से अबव है. सो उनका फंक्शन हम देखेंगे इक्वल्स टू डी काउंट A4 to A13. A4 to A13 means this table. This is A4 to A13 means entire database. फर्स्ट जो पॉइंट है. सेकेंड इज वेट. हम इसमें काउंट करेंगे कि कितना है करके. एंड थर्ड पॉइंट इज A15 to A16 मीन्स दिस मीन्स इसमें क्या है सारा टेबल्स का नाम दिया हुआ है ऊपर वाला और कंडीशन क्राइटेरिया दिया हुआ है 600. ठीक है, तो हम चेक करते हैं कितना आता है. इक्वल्स टू सो 5 आ रहा है. तो ये within one formula we can find out. There is another way we can check it is more than 600, so we will highlight one. This is not more than 600, this is more than 600. This 1200 is more than definitely 600. 650 is more than 600. 1200 is more than 600 and 1000 is more than 600. So 1 2 3 4 5. So these are the 5 conditions. 5. So this is decount means it will count how many cases we are fulfilling it. हम decount में देखेंगे कि कितना केसेस में ये कंडीशंस मीट कर रहा है और उसी का काउंट वो बता रहे हैं. ठीक है, so that's all for today. If you do like our channel, please do like, share and subscribe. Thank you.